Dear students, nature of motivation is never ending. I mean to say you, it is continuous. As we know that satisfaction of one need gives birth to the next need. According to Abraham Maslow, man is having series of needs. In order to understand the nature of needs, we have to go through the Maslow's model, which is known as hierarchical model of Maslow. Dear students, Maslow ने पहले अपने मॉडल में फिजियोलॉजिकल नीड का कॉन्सेप्ट दिया है. It means human nature first gets motivated to satisfy the physiological need. For example, food and water. जब एक इंसान की फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई होती है, because it is rightly quoted by someone, hungry man does not look like the idols and sermons. He looks the God in the form of bread. क्योंकि फिजियोलॉजिकल नीड जो है, it is also known as survival need. तो satisfaction of this need is mandatory. It is important. Now, after the satisfaction of physiological need, I mean to say you basic need. अब जो ह्यूमन बिहेवियर है, ये मोटिवेट होता है दूसरी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए. इन द मास्लोज मॉडल, सेकंड नीड इज सिक्योरिटी नीड. सिक्योरिटी नीड इन द फॉर्म ऑफ हाउस. अब एक इंसान को घर चाहिए या इकोनॉमिकल सिक्योरिटी होनी चाहिए. जब अब उसकी ये नीड भी सेटिस्फाई होती है, नाउ मैन विल नॉट स्टॉप द फंक्शन. इट मीन्स ह्यूमन नेचर अब खामोश नहीं बैठेगा. The human beings wants to satisfy the third need. As per the model is concerned, third need includes love and belongingness need. Dear students, जैसे कि हम सब जानते हैं, we are the multiple beings. It means within the being there are number of beings. We are physiological beings. We are biological beings. We are intellectual beings. We are social beings. We are emotional beings. By and large, we are psychological beings. हमें हर एक नफ्स को सेटिस्फाई करना है. Man as a psychological being, it means कि has to satisfy the psychological aspect. For example, if you love someone, you should also like or want to be loved by others. जैसे कि हम माँ बाप के साथ मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है, उनसे भी हमें प्रॉपर लव और रेस्पेक्ट मिलना चाहिए. नाउ आफ्टर द सेटिस्फैक्शन ऑफ थर्ड नीड, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड, अकॉर्डिंग टू मास्लो देयर इज फोर्थ नीड, दैट इज सेल्फ एस्टीम नीड. डियर स्टूडेंट, सेल्फ एस्टीम नीड वो नीड है जिसमें एक इंडिविजुअल ट्राइज टू मेंटेन द सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सेल्फ रिगार्ड. क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, वी आर मल्टीपल बींग्स. हमें फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है, इमोशनल एस्पेक्ट भी है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है, और हर एक एस्पेक्ट को हमें सेटिस्फाई करना है. और एक इंसान की जदोजहद कंटिन्यूअसली रहती है टिल द इंडिविजुअल लीड्स टू द हाईएस्ट नीड, दैट इज नोन एज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. डियर स्टूडेंट्स, एट द एंड वी कैन से दैट द नेचर ऑफ मोटिवेशन इज नेवर एंडिंग. इट इज कंटिन्यूअस. एक नीड को सेटिस्फाई करने के बाद दूसरी नीड पैदा हो जाती है. जब हम उस नीड को भी सेटिस्फाई करते हैं तो तीसरी नीड जन्म लेती है. जब हम तीसरी नीड के पीछे भागते हैं और उसे सेटिस्फाई करते हैं तो चौथी नीड यानी कि जन्म लेती है. इस तरीके से ये सिलसिला कंटिन्यूअसली चलता रहता है टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ द लाइफ.